थर्ड असाइनमेंट Yes, आपको ma'am. मिल गया है और क्विज की Yes, डेट ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस संडे है. Yes, ma'am. ठीक. So you will have your first quiz on 16th of January. Time I will communicate you because all the groups of first semester will have the quiz at the same time. So when it will be decided, the timing will be decided, I will communicate it to you. मैम वो टोटल डिफरेंशियबिलिटी एक बार फिर से बता दीजिए. Total differentiability. Total वो डेल रो वाला differentiability की डेल रो कल बताया तो था बेटा, वो दैट इज द डिफरेंस इन द डिस्टेंस. मैम वो समझ में नहीं आ रहा मैम, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए आप. You have to find the limit of del z minus dz upon del rho. ये आप मेमोराइज कर लो. If you have to find the total, whether the total differential exists or not. So if the limit of this value del z minus dz upon del rho, if it exists, then we say that the function is differentiable, and if it does not exist, then we say that the function is not differentiable. ठीक. तो अब इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है. मैम ये जो मैम एक्सप्रेशन में लिखा था मैम डेल z टू डेल x प्लस डेल y प्लस एप्सिलॉन डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन टू डेल्टा y. मैम इसका यूज भी नहीं करते मैम क्वेश्चन में कहीं पे मैम. क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं. अब हमने जो लिमिट ही निकाली थी r इज इक्वल टू, जो हमने क्वेश्चन किया था नॉट डिफरेंशिएबल वाला, तो उसमें ही आप चाहते तो उस फंक्शन को इन द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते थे. डेल z माइनस dz की वैल्यू वहां से रख के इन द टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2. मैम क्विज में मैम मीन वैल्यू थ्योरम तक पूरा आएगा. हाँ, मीन वैल्यू थ्योरम तक पूरा आएगा. यूनिट 1 तुम लोग को लेक्चर प्लान भेजा था ना, उसमें लिखा हुआ था ना यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं. यस मैम. हाँ, तो जो जो टॉपिक्स हैं वो सब आएंगे. तो वी वर डूइंग जैकोबियन. मैम एक और क्वेश्चन करा दीजिए. हाँ, जैकोबियन का लिखो. इफ u is equal to f x y z, u is a function of x y z, and x is equal to r sin theta cos phi, y is equal to r sin theta. ये कौन से कोऑर्डिनेट्स है? sin phi and z is equal to r cos theta. कोई बताएगा? मैम पोलर मैम पोलर कोऑर्डिनेट. पोलर तो नहीं है. These are cylindrical coordinates. ये तो पता है सबको. दिस इज एक्स वाई जेड. ये कौन से कोऑर्डिनेट्स है? जहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस कार्टेशियन coordinates. So you are changing now. Here also x y z are independent variable when we are considering in Cartesian coordinate system. But when we go to cylindrical coordinate systems, the independent variables are r, theta and phi. ठीक. So x y z, this becomes the dependent variable and the independent, which are dependent upon r, theta and phi. ठीक. So we have two sets of independent variables. One set is x y z, and which again is dependent upon the independent variables r, theta and phi. Clear? So then show that del f upon del x whole square plus del f upon del y whole square plus del f upon del z whole square is equal to
del f upon del r whole square plus 1 upon r square del f upon del theta whole square plus 1 upon r square sine square theta del f upon del phi whole square. So you have to show this. Okay. So first we find the Jacobian of this. Now Jacobian कैसे निकालेंगे? Jacobian will be first set of independent variables x, y, z upon second set of independent variable r, theta, phi. उल्टा नहीं कर देना because r, theta, phi are the independent variable and x, y, z are dependent on r, theta and phi. Okay. So you find out the Jacobian and tell me the value of this Jacobian. बताओ क्या होगा जल्दी से. ठीक, similarly बाकी variables. जल्दी से बताओ क्या आएगा. मैम जैकोबियन की वैल्यू आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. नहीं, जैकोबियन की वैल्यू गड़बड़ आ रही है. फिर से देखो. This is r square sin theta. मैम साइन क्यूब थीटा आया था. मैम आर स्क्वायर साइन थीटा ही आ रहा है. यस मैम. किसी का आया? यस मैम. चेक करो कहीं पे गड़बड़ किया है. ठीक, so this you all can calculate. I don't have to do this, or anyone wants me to do here. So we may proceed. Now find out the value of different f, y, z upon del r, theta, phi. मैम स्क्रीन विजिबल नहीं. स्क्रीन नहीं आ रही है. मैम स्क्रीन नॉट विजिबल. अब
आ गई? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। दोबारा शेयर करा है। अभी मैम आर कितनी स्क्वायर विजिबल है? आ गया। मैम आ गई। यस विजिबल। आ गई? It is. Yes, ma'am. यस मैम। हाँ चलो आर स्क्वायर साइन थीटा ये आया जैकोबियन की वैल्यू। यस मैम। यस मैम। Now find out different values del fyz upon del r theta. ये सब निकालो जल्दी जल्दी। del f xz upon del r theta phi f के रिस्पेक्ट में, then del y and del z. चेक करो ये आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई डेल एफ अपॉन डेल आर प्लस आर साइन थीटा कॉस फाई डेल एफ अपॉन डेल थीटा प्लस माइनस आर साइन फाई डेल एफ अपॉन डेल फाई। सिमिलरली ये वाला डिटर्मिनेंट आएगा माइनस आर स्क्वायर, जल्दी जल्दी चेक कर लो, साइन फाई डेल एफ अपॉन डेल आर माइनस आर साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई डेल एफ अपॉन डेल थीटा माइनस आर कॉस फाई डेल एफ अपॉन डेल फाई। एंड तीसरी वैल्यू निकालो डेल एफ एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा फाई। आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा
del f upon del r minus r sin square theta del f upon del theta. चलो हो गया ये। मैम क्वेश्चन दिखा दे 1 मिनट। Coming to now we calculate the value of del x by del x की value निकालो. This will be 1 upon j del r theta phi. So this is equal to ये वैल्यू निकाल चुके हैं divided by the Jacobian. So we get it sin theta cos phi del f by del r plus मैम स्क्रीन cos theta कंप्लीट हो गया आपकी? cos phi upon मैम r. मैम स्क्रीन नहीं फ्रीज हो गई मैम। स्क्रीन नहीं भेजूंगा। Not audible, ma'am. Ma'am, you are not audible.
ठीक. Yes, Similarly, ma'am. del Yes, f ma'am. upon del y निकालो. So this is minus 1 3 upon ये j लिखे थे 2. del of f x z upon del r theta phi. So this is equal to sin theta sin phi del f upon del r plus cos theta upon r sin phi del f upon del theta plus cos phi upon R sin phi. r sin theta del f upon del phi. Now suppose this is equation number 1, this is equation number 2, and third is del f upon del z. This is 1 upon j del f x y upon del r theta phi. So this is equal to cos theta del f upon del r minus sin theta upon r del f upon del theta. This is equation number 3. Now result आपको क्या चाहिए? Equation number 1 का square plus equation number 2 का square plus equation number 3 का square. So you calculate this, and whatever you get, this is the right hand side of the required result. ठीक. So this you can do simple calculation. I am not doing here. आप लोग खुद से करोगे इसे. साइन थीटा कॉस थीटा की कुछ प्रॉपर्टी अगर यूज करनी पड़ जाए तो दैट यू कैन use to get the result, required result. Now we are coming to derivative of implicit function. Now if there is a function f(x,y) is equal to 0, which defines implicitly a function y is equal to fx, we can write it in the form, you take y on the left hand side and all the rest of the term, all the terms of the x involving x in the right hand side. So if you can do this, then this function is called the implicit function. So always this is not possible, right? So that you get a linear function of y on the right hand side, left hand side. So this is always not possible. So if it is not possible, then this function is not implicit. Now this is a function of this of one independent variable x, then what is the value of dy by dx? Dy by dx, this is equal to minus fx means del f by del x at xy upon अविरल तुम्हारा कैमरा खुला है, बंद कर. xy, where the denominator should not be equal to 0. ठीक. Now if it is a function of 3 variables, then so similarly if fx yz is equal to 0 defines one of the variables x y z implicitly in terms of the other two variables
then del z upon total variable dz upon dx when y is constant, this is equal to minus fx upon fz. This means that y is taken as constant. Take. Now similarly, dy upon dz, here x will be taken as constant. This is equal to minus fz upon fy. So when you calculate the value of del f upon del z, you will treat x as a constant value, and del f upon del y, you will treat x as a constant value. And of course, these two denominators should not be equal to 0. So because if they are 0, then this cannot be defined. And similarly, dx upon dy, when z is treated as constant, is minus fy upon fx. Now you multiply equation 1, 2 and 3. Then what is the value? Dx upon dy, z constant, dy upon dz, x constant, dz upon dx, y constant. This is equal to minus 1. कैंसिल हो जाएगा ना? Yes, ma'am. ठीक. और del x upon del y, z constant, del y upon del z, x constant, del z upon del x, y constant. This is equal to minus 1. ठीक है, सही है ना? Because we are taking z as constant and here y is the independent variable, so x is dependent upon y only. From this we can see that here. ठीक, so x is dependent upon y, that is we are writing x is equal to phi of y. ठीक, so it is a single variable the dependency is on single variable, so either you write the total derivative or the partial derivative, both means the same. So write a question on this. Find dy by dx if fxy is equal to x square upon a square plus y square upon b square minus 1 is equal to 0. Okay, so this is an implicit function. It is very clear that you can write y is equal to phi x from here. You can get a function in terms of y is equal to phi x. Okay, so this is an implicit function. So what is the value of del f upon del x? 2x upon a square, and similarly del f upon del y is 2y upon b square. So what will be the value of dy upon dx? This will be minus fx upon
fy. This is b square x upon a square y, and y should not be equal to 0. Otherwise, the denominator will become 0. Clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now coming to higher order partial derivatives. Now let f is a function of x and y. Then the second order partial derivatives सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होंगे? del 2f अपॉन del x स्क्वायर, del 2f अपॉन del x del y, del 2f upon del y del x, and del 2f upon del y square. So these are defined as f of x means del 2f upon del x square. This is del y del x of del f by del x. Okay. So means this is the value of fx, this is fx, this value, this is fx. Okay, so we can write it as del by del x of fx. Now apply, now our function is fx, and you apply the definition of partial derivative of fx. तो क्या हो जाएगा? So this is limit delta x tends to 0, fx of x plus delta x comma y minus fx of xy upon delta x. ठीक. Now similarly fyx, this is equal to del 2f upon del y del x. So what is this? This is del by del y of del f upon del x again. Okay. So this is equal to limit delta y tending to 0, fx of x, y plus delta y minus fx of xy upon delta y. ठीक है, क्लियर है सबको? Now similarly fxy क्या हो जाएगा? del 2f upon del x del y. So this is del by del x of del f upon del y. This means del by del x of f of y. ये क्या हो जाएगा? This will be limit delta x tending to 0. Now you apply this on fy. तो क्या होगा ये? fy of x plus delta x comma y minus fy of xy upon delta x. Now again fyy क्या होगा? del 2f upon del y square. This means del by del y of del f by del y.
So this is limit delta y tending to 0, fy of x, y plus delta y minus fy of xy on delta y. Clear? Yes, ma'am. Now write the note. This fxy and fyx, these are mixed derivative. Now if fxy and fyx are continuous, अगर ये दोनों continuous होंगे, continuous functions at the point pxy, then at this point these two must be equal. So if these are continuous functions, then these two are equal. So it means what is the contrapositive of this statement? If fxy is not equal to fyx, then these two are not continuous. One of these two are not continuous. ठीक है? So we can use this equality to check the continuity of fxy and fyx. Second note is, if all the second order partial derivatives exist at all the points in the domain D, then these derivatives can further be differentiated and we can find third order partial derivatives, etc. थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इसी तरह निकालते जा सकते हैं. जैसे सेकेंड ऑर्डर को निकालने में फर्स्ट ऑर्डर का यूज किया है, तो थर्ड ऑर्डर को निकालने में सेकेंड ऑर्डर का यूज करेंगे. So write a question on this. Compute fxy at 0, 0 and fyx at 0, 0 for the function given is fxy is equal to xy cube upon x plus y square. Here xy is not equal to 0, 0 and this is 0 when xy is equal to 0, 0. Also discuss the continuity of fxy and fyx at 0, 0.
तो उसको निकालो। ठीक, so first we have to calculate fx at 0 0. This will be limit delta x tending to 0 f delta x 0 minus f 0 0 अपॉन डेल्टा एक्स। निकालो क्या आएगी, एन एफ वाई एट 0 0। वन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। डेल एक्स की लिमिट नहीं लोगे, मैम इंफिनिटी आएगी मैम इसमें। नहीं 0 आएगा। नहीं आएगी, मैम 0 आएगा। 0 आएगा। 0 आएगा, ऊपर भी तो है। मैम f5 भी 0 आएगा। सही से रखो ना, डेल एक्स 0 क्या आएगा, डेल एक्स 0 में क्या रखोगे, यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दो, तो y की वैल्यू Yes, 0 ma'am. रख दी तो दिस होल बिकम 0 and f of 0 0 is 0, so whole numerator is 0 upon del x, so it means the Yes. function is 0. Similarly ये क्या आएगा, del y tends to 0, 0 ये भी 0 आ जाएगा। Yes, 0 ma'am. कॉमा डेल्टा y माइनस f 0 0 upon delta y, this is again 0. Now you find out the value of fx 0 y, ये वैल्यू निकालो, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f of डेल्टा x कॉमा y माइनस f 0 y अपॉन डेल्टा x, ये वैल्यू निकालो और बताओ कितनी आएगी। ये क्यों निकाल रहे हैं वैल्यू, Y. क्योंकि इनका यूज this And is y. y. Now find out the value of fy x 0, ये निकालो। Ma'am 0. Yes. Now coming to the value of fxy at 0 0, we have to find out this. तो ये क्या हो जाएगी, fy पे हमें डेल एफ बाई डेल एक्स लगाना है, ठीक। तो लिखते हैं क्या, कंफ्यूजन हो तो हमें डेल एफ बाई डेल एक्स लगाना है किस पे, एफ वाई पे एट 0 पे। तो दिस इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, अंदर क्या बचा, एफ वाई एट डेल्टा एक्स कॉमा 0 माइनस एफ वाई 0 0 अपॉन डेल्टा एक्स। तो अब ये वैल्यूज रखो, तो दिस इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, एफ वाई एट एक्स 0 हमने निकाला हुआ है, तो दिस इज 0 0 माइनस एफ वाई एट 0 0, ये भी 0 आया था, ये भी निकाला हुआ Yes, था, ma'am. 0. ठीक। Yes, ma'am. Limit 0 हो अपॉन जाएगी तो। डेल्टा एक्स, so this is 0.
नाउ एफ वाई एक्स एट 0 0 ये निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, डेल वाई ऑफ एफ एक्स एट 0 0. So this is limit delta y tending to 0 and fx 0 comma delta y minus fx 0 0 upon delta y. अब ये वैल्यू निकालो कितनी आएगी, 1 infinity. डेल्टा y tending to 0 0 y fx at 0 y ये कितना निकला था, y y आया y था, निकला हाँ, Y तो y दिस विल बी निकला। डेल्टा y, यहाँ पे मैंने डेल्टा y रखा हुआ है, ठीक, fx 0 0 0 आया है अपॉन डेल्टा y, so this gets cancelled and we get the value 1. अब कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, so you write since fxy is not equal to fyx, therefore these are discontinuous. not continuous, both will be discontinuous. हाँ बोथ हो जाएंगे 0 0. ठीक है, तो आगे हम लोग फिर कल करेंगे नेक्स्ट टर्म पे. सिमिलरली मिक्स डेरिवेटिव निकालने के और क्वेश्चंस अपने बुक से करना, एक हमने बता दिया है, बाकी आप अपने आप से करेंगे. तो मतलब अगर आपको मिक्स्ड डेरिवेटिव निकालने हैं, इफ यू आर फाइंडिंग द मिक्स्ड डेरिवेटिव, दिस मींस दैट you will find out the first mixed derivative or the second order derivative fxx fyy भी अगर आपको निकालना है, then first order derivative भी आपको लिमिट की डेफिनेशन यूज करके ही निकालना है. ठीक, ये नहीं कि उसको वैसे निकाल लिया और मिक्स डेरिवेटिव को डेफिनेशन यूज करके निकाल रहे हैं, नहीं, दोनों को वैसे निकालना है. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर में दिया हुआ है ना? हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर में दिया है. आपका यूनिट 2 है, लेक्चर प्लान आपके पास भेजा था, उसमें देख लो, यूनिट 2 में ये आ रहा है सब. मैम, और बुक में मैंने देखा तो फंक्शंस विद सेवरल वेरिएबल्स आप पढ़ाई है, तो वो बुक में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स ले रहा है, वो सेवरल वेरिएबल्स नाम से नहीं आ रहा है. नहीं आएगा, पीछे इंडेक्स में चेक करो, आ जाएगा. मैम इंडेक्स में भी चेक किया है मैंने. कौन सी बुक देख रही थी?